Hello everyone, welcome back to our CSIR Net Life Science Immunology series. Today we are going to understand one of the most important concepts in immunology, that is epitopes. Almost every year questions related to epitopes are asked in CSIR Net, CAT, BT, IIT JAM and MSc Entrance examinations. But yes, today we are not going to memorize. Instead, let's understand it through a simple story. Now just imagine, as in the previous video we did, imagine your body as a huge kingdom. One day a thief enters the kingdom. अब एक चोर हमारे kingdom में आ गया. Now tell me, do the soldiers need to remember every detail of the thief? कि उसकी height कितनी है, कितना बड़ा है, क्या कपड़े पहने हैं. सपोज अगर एक किंग अनाउंस करते है ना, ऐसा तो नहीं होता ना कि उसकी हाइट, वेट, कपड़े. सपोज अब अगर किंग ने अनाउंस कर दिया, कैच द थीव वेयरिंग द रेड कैप. नाउ एवरी सोल्जर इज सर्चिंग ओनली फॉर दैट वन आइडेंटिफाइंग फीचर, दैट इज द रेड कैप. द रेड कैप इज एग्जैक्टली व्हाट एन एपिटोप इज. The thief represents the antigen, the red cap is the epitope, and the soldiers present are immune cells. Now there is a confusion है ना, every time सबको ये confusion होता है कि एंटीजन एपिटोप और पैराटोप में क्या डिफरेंस होता है. तो एपिटोप एंटीजन पे होता है, पैराटोप एंटीबॉडी पे होता है. तो ये बात हमें ध्यान रखनी है. So remember this forever. An epitope is the identity card of an antigen. As you can see in the slide that this thief is wearing the red cap. So ये thief एक antigen है, but इसकी जो identity है, ये जो red cap पहना है, ये epitope है. Card जो दिख रहा है वो है immune cells. Small unique spots on an antigen, epitopes, antigenic detergents. Now what is an epitope? Now let's understand the actual definition. An epitope is a small region on an antigen that is recognized by the immune system. Epitope antigen पे present होता है, पैराटोप एंटीबॉडी पे. अच्छा, ये रिकग्नाइज कराने में हेल्प करता है, बट ये रिकग्नाइज करता कौन है? सबसे पहले बी सेल्स. बी सेल रिसेप्टर्स और एंटीबॉडीज कैन बाइंड डायरेक्टली टू द एपिटोप्स प्रेजेंट ऑन द एंटीजन. दूसरा टी सेल्स. BCR, B cell receptors, TCR, T cell receptors. However, T cells are different. They cannot see the antigen directly. T cells antigen को directly नहीं देख सकते. The antigen must first be processed into small peptide fragments. These peptide fragments are then presented by MHC molecule, major histocompatibility complex. बी सेल डायरेक्टली पहचान लेगा, टी सेल डायरेक्टली नहीं पहचान सकता, प्रोसेस करके देना पड़ेगा पेप्टाइड्स के फॉर्म में. वो काम कौन करेगा? एमएचसी. प्रेजेंटेशन का काम एमएचसी करता है. टी सेल रिकग्नाइज्ड प्रोसेस्ड पेप्टाइड, एपिटोप्स प्रेजेंटेड बाय एमएचसी मॉलिक्यूल. द डिफरेंस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. वाई डिड नेचर मेक एपिटोप्स? अब क्या ज़रूरत थी एपिटोप्स बनाने की? Now let's think like nature. Why didn't evolution allow immune cells to recognize the whole antigen? Imagine a bacterium contains thousands of protein. बहुत सारे प्रोटीन, हज़ारों प्रोटीन होते हैं बैक्टीरिया में. तो if every immune cell had to study the complete bacterium every single time, immune recognition would become स्लो एंड एफिशिएंट. पूरा बैक्टीरिया पड़ेगा. अब आप एक बात बताओ, अगर आपको बोला जाए कि इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आप वो टॉपिक पढ़ोगे तो जल्दी समझ में आएगा, आसानी से हो जाएगा. अब पूरी बुक पढ़ने बैठोगे तो टाइम लगेगा. सिमिलरली पूरा बैक्टीरिया पढ़ेंगे तो इम्यून रिस्पॉन्स स्लो हो जाएगा. और अगर सिर्फ एक पार्ट पढ़ेंगे उसका, दैट इज़ योर एपिटोप, तो जल्दी होगा इम्यून सिस्टम का काम. If every minute immune cell had to study the complete bacterium every single time, immune recognition would become slow and inefficient. Nature solved this problem beautifully. Instead of recognizing the whole molecule, the immune system recognizes only a small identifying portion. This makes immune recognition specific, fast, accurate, and highly efficient. It also slows millions of different immune cells to recognize millions of different pathogens. That's why epitope exists. Just remember this line: the immune system recognizes identities, not entire molecules.
Now, B cell epitopes versus T cell epitopes. We studied that about B cell and T cell epitopes in the previous slide. Now, let's compare B cell and T cell epitopes. B cell recognize the antigen exactly as it exists in the nature. कोई processing नहीं, कोई MHC नहीं, सीधा खाना आया दे दिया. Now, on the other hand, T cells cannot recognize the intact antigen. The antigen must first be broken into peptide fragments. मतलब हम एक पोटैटो लेके आए आलू, बी सेल क्या करेगा, पूरा पूरा आलू रिकग्नाइज करवा देगा. बट टी सेल का क्या सीन है, उसको काटो, उसकी सब्जी बनाओ एंड ऑल. सो दीज पेप्टाइड्स आर डिस्प्लेड ऑन MHC molecules. Only then can the T cell receptor bind. So as a simple memory trick for you, B means beautiful outside. B cell recognizes the outer surface of the antigen. T means tucked inside. T cells recognize peptide fragments after processing inside the cell. If you remember this trick, you'll never confuse B cell and T cell epitopes again. Now, B cell versus T cell comparison. What they recognize? B cell recognize native antigens as it is on the surface, beautiful outside. T cell processed को where they see the antigen surface पे. B cell surface पे देखती है, extra cellular view. T cell inside. रिसेप्टर्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं? बी सेल रिसेप्टर फॉर बी सेल एपिटोप्स, टी सेल रिसेप्टर्स फॉर टी सेल एपिटोप्स प्लस द MHC molecules. Nature of epitope, conformational, that is discontinuous or linear. T cell antigen processing, always linear peptides. बी सेल में आपको डिसकंटिन्यूस मिल सकते हैं कन्फर्मेशनल लीनियर पेप्टाइड्स, वेराज टी सेल्स में हमेशा लीनियर मिलेंगे. प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड होती है बी सेल में? नहीं, कोई प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड नहीं होती. टी सेल में एंटीजन प्रोसेसिंग इज एसेंशियल. MHC मॉलिक्यूल, कोई MHC नहीं होता बी सेल में, बी सेल एपिटोप्स में. टी सेल एपिटोप्स, yes, MHC 1 for CD8, MHC 2 for CD4 T cells. This you have to remember. This is quite important that MHC 1 is for CD8 plus T cells and MHC 2 is for CD4 T plus cells. सेल्स इन्वॉल्व कौन सी होती हैं बी सेल एपिटोप्स में? बी लिम्फोसाइट्स और टी सेल में टी लिम्फोसाइट्स. Main function helps in antibody production, humoral immunity, and T cell epitopes help in cell mediated immunity. Example, surface proteins, polysaccharides. T cell में viral proteins. Some examples of epitopes are linear continuous epitopes. As you can see, they are made up of continuous sequence of amino acid. 4 से 8 amino acid की एक particular sequence है, recognized by B cell receptors. Can all epitopes have the same structure? क्या लगता है सारे epitopes का एक ही structure होता होगा? No. This concept frequently appears in CSIR net exams. There are two major types of epitopes: linear epitopes and conformational epitopes. Imagine you have a necklace made of different colored beads. If I cut the necklace into straight line, the sequence of beads remains the same. This is similar to linear epitope. A linear epitope depends only on the amino acid sequence. Even if the protein unfolds or becomes denatured, the sequence remains the same. So the epitope can still be recognized. Now imagine if I fold the necklace into shape of a flower, suddenly beads that were far apart come close together. This creates a completely new shape. This is called conformational change. उसको तोड़ मरोड़ दिया तो जो सपोज 95 वाला है वो 1 के पास आ गया, 65 वाला कहीं और चला गया. सो ये पास में आ जाएंगे जिससे स्ट्रक्चर में चेंज आएगा. है रिकग्निशन डिपेंड्स ऑन द 3-dimensional structure of protein. If the protein unfolds, the shape disappears and the immune system can no longer recognize that epitope. So remember, linear मतलब sequence, conformational मतलब shape. Whenever you see a question asking which epitope is destroyed by protein denaturation, the answer is conformational epitope because the 3-dimensional structure is lost. High yield points for CSIR net. An antigen can have many different epitopes. This means one antigen can activate many different B cells at the सेम टाइम. एक एंटीजन पे बहुत सारे एपिटोप्स होते हैं तो बहुत एक ही बी सेल को काफ़ी डिफरेंट बी सेल्स को सेम टाइम में एक्टिवेट कर सकता है. सेकेंड, बी सेल एपिटोप्स मे बी आइदर लीनियर और कन्फर्मेशनल, एंड वी स्टडीड अबाउट टी सेल एपिटोप्स
They are always linear. Antibodies bind directly to native antigen. T cell receptors never bind free antigens. They require peptide presentation through MHC molecules. These 4 points are extremely important for competitive exam. Now, there is a memory trick, easy way to remember for you all. Imagine a postman. The postman delivers a parcel to your house. Who receives the parcel directly? You do. This is exactly how B cells work. They recognize the antigen directly. Now imagine the parcel is sent to security office first. The security officer opens the parcel, checks it carefully, and then shows only one important document to you. This is exactly how T cells work. The antigen is first processed inside an antigen presenting cell. Only a small peptide fragment is displayed on an MHC molecule. Then the T cell receptor recognizes it. So, there are some practice questions for you. We'll be doing the practice questions in the next video. So thank you for watching, and we'll be meeting in the next lecture. In the next lecture, you'll learn why vaccines sometimes don't work well without adjuvants. This is also an important topic. Thank you.